Hello students, welcome back to my channel. Today I'm going to continue the series on previous year assignment questions and answers with explanation. So in the previous videos, as you can watch in my previous videos, so in the previous videos I have discussed about paper 5 and uh, paper 6. So if you didn't watch them yet, then go check them out now. So today I will explain the questions and answers for paper 7. So let's get started. Basically this paper is easiest paper and the name of this paper is Indian English Literature and Indian Literature in Translation, as you can see in your screen. Okay, so let's go for the first slide. First slide you can see the question: who gives Baka a hockey stick in Untouchable? All you already read about Untouchable. This is a very important novel and very beautiful novel. Okay, so basically in this novel there are characters: Havildar Charat Singh, Havildar Mohanlal, Gurmukh Singh, Dhyan Chand. Basically, uh, uh, you know. A few characters actually are very much important, and Havildar Charat Singh is one of them. Okay, so uh, here is the correct answer is Havildar Charat Singh. Why I'm saying, because he is the character, guys. You just understand. He is the character who shows kindness towards Baka. If you start reading this novel, then you can understand. In the starting point, you can also see that Havildar Charat Singh and Baka, both of them have a good relationship, and he is often even he is an officer in British Indian Army. Okay, and when he sees Baka admiring his hockey stick, then he generously offered to him for this. And this is actually significant in the novel, as it represents a moment of kindness and humanity in Baka's life, which is otherwise filled with discrimination and hardship due to his status as an untouchable. बेसिकली हविलदार चरत सिंह जो है उनको ये अनटचेबल वगैरह से कोई मतलब नहीं था, वो उनका जो रिलेशनशिप है बाका के साथ बहुत अच्छा था. सो आप लोग इस नोवेल को अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को. और यहाँ पे कास्ट जो है उसके डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बोला गया. सो जब आप लोग पढ़ोगे, मैं उस बारे में नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में. ठीक है, वीडियो में लेंदी नहीं करने वाला. सो आप लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल है. इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है. कैरेक्टर, बाका कैरेक्टर या फिर हविलदार चरत सिंह कैरेक्टर. सो कुछ कैरेक्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको पढ़ लेना. ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. जैसे कि इस स्लाइड में हम लोग समझ गए कि हविलदार चरत सिंह इज द कैरेक्टर हु एक्चुअली gave his hockey stick to Baka. Okay, so basically the next slide you can see that where is the story of the guide set. The guide is very much important also, right? So options are Tirupati, Hyderabad, Pondicherry and Malgudi. So you have to understand, guys, here we have to understand that Mulkraj Anand actually my mistake. RK Narayan, RK Narayan actually wanted to show the fictional city, fictional town. So इन चारों में fictional town कौन है? बाकी तो तिरुपति देखो fictional नहीं है, it is exist. हैदराबाद भी exist है, इसका भी existence है. Pondicherry is also exist. So Malgudi is the city, town. Malgudi is a fictional town created by R.K. Narayan and serves as the setting of many of his novels. Just understand, many of his novels. मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते चलो, तो इससे क्या होगा ना, आप लोगों को मदद मिलेगी. सिर्फ असाइनमेंट एग्जाम में नहीं,
आगे जाकर जो टर्मेंट होगा उसमें भी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। जो आर के नारायण थे वो फिक्शनल सिटी मतलब टाउन के बारे में अपने ज्यादातर नॉवेल्स में बात किया करते थे। सो बेसिकली आर के नारायण एंड यू नो this fictional city actually created by R.K. Narayan and serves as the setting for many of his novels and stories. Just understand, guys. If I say including the guide, right? The guide by R.K. Narayan, the town is actually depicted with rich details, which becomes a significant part of Narayan's literary universe. जैसे कि कुछ यूनिवर्स का मतलब है वो एक होता है ना सीक्वेंस, सो वैसा ही हिज लिटरेरी यूनिवर्स। ओके, सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में कहा गया फ्रॉम हुज वर्क्स, जस्ट अंडरस्टैंड, फ्रॉम हुज वर्क्स आर द टू एपिग्राफ्स इन अनीता देसाई's clear light of day taken. So this is very much important question and also you should note down this question. आप लोग इस क्वेश्चन को शायद अपने इस मतलब 2024 में जो आएगा अभी असाइनमेंट होने वाला है उसमें भी शायद आप लोग इस क्वेश्चन को रिपीट देख सकते हैं, मगर इंपॉर्टेंट है। अगर रिपीट ना भी आए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली लेट्स लेट्स सी कौन से यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड एमिली डिकिंसन एंड वॉशिंगटन इरविंग, टीएस एलियट एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन एंड टीएस एलियट। तो वो दो इंसान कौन थे? Basically, guys, you have to understand one point that Emily Dickinson and T.S. Eliot, these two writers actually prominent writer. So Emily Dickinson and T.S. Eliot are the two poets whose works actually are used an epigraph in Anita Desai. Clear light of the day. Clear light of day. And remaining are not involved actually. If I say Robert Frost is not actually involved here for epigraph, or if I say Washington Irving, he is also not. And if I say about Robert Frost, so he is also not. Robert Frost, Washington Irving, you know, ये दो कैरेक्टर्स मैच नहीं बैठते हैं इसमें। और बाकी के जो दो हैं एमिली डिकिंसन एंड टीएस एलियट, ये दोनों मतलब उनका मतलब यही आंसर है। तो एमिली डिकिंसन एंड टीएस एलियट एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी, okay, option D is the correct answer. Okay, because Emily Dickinson and T.S. Eliot are two both poets whose works are used for epigraphs. Basically, they were using epigraph. So that is why the correct answer is Emily Dickinson and T.S. Eliot. Okay, next slide में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बोला गया है कि टू विच पोएटिक जॉनरा, टू विच पोएटिक, आप लोग क्वेश्चन को समझो, टू विच पोएट्रिक जॉनरा डज तोरू दत्त's poem लक्ष्मण belong? कौन सा जॉनरा हो सकता है? आप लोग गेस करो, चलो आप लोग थोड़ा सा गेस करो, 5 सेकंड दे रहा हूं, गेस करो। लिरिक, बैलर, epic and satire. Basically I just want to explain all the four actually. You have to understand that why uh, you know a single option is here is right and remaining are not right, not correct. If I say about lyric, if you ask me what is lyric, so lyric poem actually is a typically a short, emotional and personal piece. And let's talk about the ballad जैसे कि होता है ना लिरिकल बैलर। सो बैलर क्या है? बैलर इज अ
narrative poem that tells tells a story, often in a song like form. समझ रहे हो? टेल्स अ स्टोरी. तो यहाँ पर तो हम लोगों को समझ में आ गया, बिकॉज लक्ष्मण जो पोएम है उसमें भी तो स्टोरी के बारे में जिक्र किया गया है ना, राइट? एपिक के बारे में बात करते हैं. एन एपिक एक्चुअली इज अ लेंदी नैरेटिव पोएम. अंडरस्टैंड? एन एपिक is a lengthy narrative poem, often detailing heroic deeds and events significant to a culture or nation. समझ गए आप लोग? And what is satire? So सब कुछ मैं जब एक्सप्लेन कर ही दिया तो satire, let's talk about satire. You know satire? What is satire? Satire is a genre also that uses humor, irony, or ridicule to criticize and expose folly or vice. So guys, basically यहाँ पे कंक्लूजन क्या आता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठता है. अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है. सो गाइस, Torudat's Lakshman poetry, basically Lakshman poem, can be classified as a ballad due to its narrative style, emotional depth, and uses of dialogue to tell a story. पहले ही मैंने बैलड बोलने के टाइम पे बताया था ना, टेल्स अ स्टोरी. नैरेटिव बैलड इज अ, क्या बोला था मैंने? A ballad is a narrative poem that tells a story, often in a song like form. So यहाँ पे फिट बैठता है बैलड. सो यहाँ पे एलिमिनेशन, आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं हो ना, आप लोग एलिमिनेशन करना शुरू करो. मीनिंग को समझो और एलिमिनेशन करना शुरू करो. एलिमिनेट करो सारे ऑप्शंस को, तो जो बच जाएगा उसको आप लोग टिक मार्क देके चले आओ. So ये सिर्फ मतलब असाइनमेंट एग्जाम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही मतलब रूल फॉलो किया जाता है, यही टेक्निक फॉलो किया जाता है. एनीवेज, सो करेक्ट आंसर इज बैलर. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में बोला गया कि व्हाट इज द लोकेट सॉरी व्हाट इज द लोकेल ऑफ टैगोर्स, लोकल होगा शायद. What is the local of Tagore's Red Oleanders? So कौन सा मतलब टैगोर का जो रेड ओलियंडर्स है, what is the लोकेल ही है एक्चुअली. हाँ, लोकेल ही है. So what is the locale of Tagore's Red Oleanders? So options are Yaksha town, Swargapuri, a, a cosmopolitan city, a village in Bengal. सो आप लोगों के मन में आ रहा होगा शायद क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बोला गया तो विलेज इन बंगाल हो सकता है, बट यू आर टोटली रॉन्ग. यस, Rabindranath Tagore is also belonging from he is also belonging from West Bengal, but it doesn't mean that a village in Bengal is the right option, because the right option is Yaksha town. Why I'm saying, because the setting of Red Oleanders is a fictional industrial town called Yaksha town. Just understand. This town is characterized by its, oppressive. Just understand. Oppressive and if I say dehumanize, उसको क्या कहते हैं? Dehum, याद नहीं आ रहा है. हाँ, dehumanizing. हाँ, ऐसा एक वर्ड है. Dehumanizing environment. So मैंने क्या कहा? This particular town is characterized by its oppressive and dehumanizing environment, dominated by the extraction of gold. If you read this particular work, then you are getting my points. You know the story. If you know the story, then obviously you are getting my points. You can connect with my points. So the setting is basically crucial
to the plays, themes of exploitation, resistance, and the quest for freedom. So here, Yaksha Town is the correct answer. Okay, and remaining are not even connected with this particular work. Actually, remaining options are not एक्चुअली ये जो ऑप्शन से फिट नहीं बैठते. सो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलते हैं. इन विच लैंग्वेज वाज गिरीश कर्नाड्स तुगलक ओरिजिनली पब्लिश? डू यू नो हु इज गिरीश कर्नाड? गिरीश कर्नाड ये वही है जो एक था टाइगर, आप लोगों ने देखा होगा उस मूवी में जो चीफ होता है ना सलमान खान का, तो वो है गिरीश कर्नाड. वो एक्टर भी थे, वो राइटर भी थे. तुगलक को उन्होंने ही लिखा है. और अगर उनके बारे में, गिरीश कर्नाड के बारे में किसी को पता है तो वो फट से बता देगा कि वो कौन से लैंग्वेज में ये पब्लिश किया गया था. इन विच लैंग्वेज इज पब्लिश्ड? ओके, ओरिजिनली पब्लिश्ड अगर मैं बोलूं. एक्चुअली गिरीश कर्नाड, गाइस, रोट तुगलक इन कन्नड़. द करेक्ट आंसर इज कन्नड़. अगर याद ना आए तो आप लोग ये समझ लो, गिरीश कर्नाड, कन्नड़, तो कन्नड़ कन्नड़ मतलब कनेक्टेड है ना काफी. वो कन्नड़ मतलब लिखते थे ज्यादा, साउथ साइड से भी थे, सो इसीलिए. सो गिरीश कर्नाड रोट तुगलक इन कन्नड़, समझ लो, कन्नड़ लैंग्वेज में. द प्ले बेसिकली वाज फर्स्ट पब्लिश इन, इफ आई से, जितना मुझे पता है, इन 1964. यस, 1964, and has since, since been translated into several other languages, but originally published in Kannada. Yes, it was published in several languages. Bengali, Gujarati, Hindi. These options are not directly connected actually. ओरिजिनली पब्लिश हुआ था कन्नड़ में, बाद में जाके बहुत सारी लैंग्वेज में वो तुगलक को मतलब ट्रांसलेट किया गया है, वो बात अलग है. बट द करेक्ट आंसर इज कन्नड़. कन्नड़, कन्नड़ बोल रहा हूँ बार बार, कन्नड़. ओके, याद रखो आप लोग इसको. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who in Dattani's final solutions give shelter to Muslim youths? फाइनल सॉल्यूशन पढ़े होगे तो आप लोगों को पता चलेगा. यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन कौन थे? रमनिक गांधी, पुजारी, हार्दिक, एंड डकवा. एक्चुअली एज पर माय कंसर्न, मुझे जितना पता है, ये डकवा नाम का तो कोई था नहीं. ये कैरेक्टर मुझे जितना पता है नहीं था. इस कैरेक्टर के बारे में आप लोग देख लेना एक बार इस फिल्म में. मुझे जितना पता है ये कैरेक्टर फाइनल सॉल्यूशन में था नहीं, तो इसको एलिमिनेट करते हैं. चलो, एक तो एलिमिनेट हो गया. एक्चुअली इसका सही आंसर क्या है मैं बता रहा हूँ. अभी मैं जस्ट स्क्रीन को ओपन करके बैठा हूँ. मेरे पास आंसर स्क्रिप्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. मैं जस्ट देख रहा हूँ और मुझे सारे चीज़ों को याद आ रहा है, इनको मतलब रिकलेक्टिंग प्रोसेस मतलब करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक्चुअली यू नो एज पर माय कंसर्न, मुझे जितना पता है, मुझे जितना लगता है, Ramnik Gandhi is the character who actually decides to offer shelter to the two Muslim youths, right? याद है? Two Muslim youths, Javed and Bobby. Remember? Have also explained this in my uh, classes. The final solution. I took this class actually, final solution. So in my class, in my previous sessions, in my uh, sessions actually, I explained about these two characters. Okay, Javed and Bobby. So my students are also understanding whatever I am saying. They are connecting my point. So basically, um, Ramnik Gandhi is the correct answer because Ramnik Gandhi actually decides to offer shelter to the two Muslims, youth, and Javed and Bobby was there. The name Javed and Bobby, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, मुझे याद है. During the communal riots, याद है? During the communal riots,
His decision is, pivotal in the play, as it explores themes of communal tension, prejudice, and possibility of reconciliation. ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखना, ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ. But the fact is, guide, but there is no character as per my concern named uh, Dakwa. I really don't remember right now. Maybe there is a character, but right now I just don't remember Dakwa is the character in Final Solution, because this option is does not relate to the characters in the play as per my concern. मुझे जितनी याद है, as I remember, मुझे जितना समझ में आ रहा है कि ये कैरेक्टर नहीं है. बाकी हार्दिका पुजारी, इट्स ओके. Ramik Gandhi is the main answer here. Okay, so आई होप आप लोगों को समझ में आएगा. सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज हुज ट्रिपल वाव ऑफ पोएट्री, chastity and obedience had great appeal for Subhash Chandra Bose. Mahajana Jain sect, Jesuit order of Christianity, Catholic order of Christianity, or Jewish order. So here is the correct answer, Jewish order of Christianity, because option B is the correct answer, guys, because uh, Jewish order, actually Jewish order, also known as the Jesuit order, also known as the Society of Jesus, which is a Catholic religious order founded by uh, Ignatius of लोयोला. आप लोग को याद है शायद, इग्नेटियस, इग्नेटियस ऐसे ही नाम था, इग्नेटियस ऑफ लोयोला, member of this order, take vows of poverty, chastity, and obedience. And Subhash Chandra Bose was influenced by the discipline and dedication of the Jesuit order during his time at a Jesuit school in his early education. So I'm just giving you fact why Jesuit order and of a Christianity is the correct answer. Okay. So these are connected. These points are connected. If you read the work, then obviously you can recollect all the points, and you can start. You start, eliminating the remaining options. Then you can choose the right options. So this is the trick, guys. So let's talk about the next question, which is, how does Tagore's essay Crisis in Civilization begin? पूछ रहा है, how does Tagore's essay Crisis in Civilization begin? Right? With a reference to his own self, with a song, with a quotation from Shakespeare, with a reference to Japan. Reference to Japan, I don't think so. This is correct answer. With a quotation भी नहीं था. With a song is also wrong answer. With a reference to his own self, yes, it is right answer, because in Crisis in Civilization, actually, you know, Tagore begins the reflecting on his own life and experiences, right? If I'm not wrong, then obviously you are connecting my points. And if you read this work, Crisis in Civilization, then you can understand whatever I am saying. The initial focus is on his personal feelings and, disillusionment. Basically, he starts by mentioning the sense of betrayal he feels as he looks back on the promises of Western civilization that he once believed in. Remember, guys? Remember whatever I'm saying. Remember. So if you read Crisis Civilization, then you can understand this option is actually. I just understand how I eliminated all the three options with a reference of Japan. No, this is wrong answer, because if you read, then obviously with a actually जो टैगोर का जो essay है क्राइसिस सिविलाइजेशन, वो इससे मतलब बिगिनिंग मतलब नहीं था.
हाँ रेफरेंस था मगर बिगिन नहीं था। शेक्सपियर का कोट्स है मगर बिगिनिंग में नहीं था, सॉन्ग भी नहीं है, पर्सनल चीजों पे बताया, अपने बारे में बताया, सो विथ रेफरेंस टू हिज ओन सेल्फ। सो ऐसे करके आप लोग एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को बना सकते हो, ओके, क्वेश्चन को सही समझ सकते हो। और गूगल पे भरोसा मत रखना, गूगल अक्सर झूठ बोलता है। गूगल, अगर आप लोग ये सोचोगे मैं जो आंसर्स बोल रहा हूँ मैंने गूगल से उठाया है और अपना एग्जाम दिया है, तो आप लोग गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गूगल से उठा कर अगर आप लोग एग्जाम दोगे तो वो राइट नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा। यूनिवर्सिटी इतना बेवकूफ नहीं है, एनएसयू इतना बेवकूफ नहीं है कि वो इजीली आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, असाइनमेंट क्वेश्चन, मतलब असाइनमेंट जैसे, जहाँ पे आप 20 नंबर्स तो ऐसे मतलब ला सकते हो, तो उस जगह पे आप लोगों को ऐसे ही नहीं दे देगा। आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, मैं जैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि फैक्ट्स आप लोगों को पता होगा एंड चीजें आप लोगों को पता होगा पढ़ने का। आप लोग अगर पढ़े हो, आप लोगों को चीजें मतलब सारे टॉपिक्स आप लोगों को पता होंगे, तो क्वेश्चन का सही आंसर निकालने में आप लोगों को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ये फैक्ट है गाइस, जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज फैक्ट। ओके, so basically the option number A is the correct answer. Okay, don't forget, option number A is the correct answer. So next question is, uh, let's talk about the next question. Who offers the modern sanitary system as an escape from the caste system in Mulkraj Anand's Untouchable? Sanitary मतलब वो सफाई का जो है मॉडर्न, जो सफाई के बारे में बोला गया है ना, आई मीन टू से वो एक टॉयलेट के बारे में बताया गया, याद करो आप लोग। ठीक है, तो किसने बताया था ये एस्केप फ्रॉम द कास्ट सिस्टम इन मुल्क राजानंद अनटचेबल? अनटचेबल में वो जो मतलब वो बताया गया ना इंग्लिश टॉयलेट के बारे में, याद है? तो कौन बताया था? कॉर्नेल हचिंसन? नो, वो तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूं इकबाल नाथ सरशार, तो ये हो सकता है, इसको मैं साइड में रखता हूँ, ये हो सकता है। गांधी जी तो वो बोले ही नहीं थे टॉयलेट के बारे में, वो बस कास्ट सिस्टम के बारे में वो स्पीच दे रहे थे। आप लोगों को पता होगा, अगर बाखा जो कैरेक्टर है वो जो भाग के गया था स्टेशन में, तो वो सुन रहा था गांधी का जो प्रवचन है वो सुन रहा था। वहां पे एक वकील और एक पोएट आया था ना, याद है आप लोगों को? एक पोएट और एक वकील आया था, वहां पे वो लोग डिस्कस कर रहे थे। एक वकील भी डिस्कस कर रहा था और वो पोएट भी डिस्कस कर रहा था एक इंग्लिश टॉयलेट के बारे में, जहाँ पे मतलब जो सैनिटरी यहाँ पे मतलब वो जो टॉयलेट है जो सब मतलब वो टॉयलेट एक ऑटोमेटिक टॉयलेट होगा, जहाँ पे शायद अब इस ये चीज सुनकर बाखा मन मन में सोच रहा था कि अब से हम मतलब जो हम लोग काम करते हैं, जो भी हम लोग सफाई का काम करते हैं, तो उस सफाई का काम हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश टॉयलेट आने वाला है। एक तरफ से आप लोग समझो कि ये चीज से कहीं ना कहीं उनका जो काम है उसमें भी इफेक्ट पड़ रहा है, उसके पापा भी सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, वहां से ही उनका रोजी रोटी आ रहा है। मगर ये चीज बाखा को समझ नहीं आया, क्योंकि आपको पता ही है कि बाखा जो कैरेक्टर है यहाँ पे, वो हमेशा से अंग्रेज के तौर तरीके उसको पसंद है। वो हमेशा से अपने जो कास्ट है और अपना जो काम है उसको पसंद नहीं करता था। वो थोड़ा सा हाईफाई दिखने का कोशिश करता था, मॉडर्न दिखने का कोशिश कर रहा था। आप लोग अगर अनटचेबल को पढ़े होगे तो आप लोगों को सही से पता होगा। लास्ट तरफ जब वो भागकर मतलब वो स्टेशन तरफ गया था, भागकर एक जगह पे बैठा था, तब गांधी जी का भाषण था वहां पे। मगर उन्होंने गांधी जी को हटा दो, उसको एलिमिनेट करो। हविलदार चरत सिंह भी वहां नहीं था, हविलदार चरत सिंह नहीं था, उसने हॉकी स्टिक दिया था मगर वो नहीं था। तो ये दोनों ऑप्शन को हटा दो। कॉर्नेल हचिंसन भी नहीं था। तो याद करो जो पोएट एंड वकील जो था ना, जो लॉयर था, वो आया था ना, याद करो। इकबाल नाथ, व्हाई आई एम सेइंग गाइस, इकबाल नाथ is the correct answer because he is a fictional character in Mulkraj Anand Nobel Untouchable, and he is a poet. He's a poet and social reformer who discusses the adoption of modern sanitary uh, practices of as a means to
address the issues of untouchability and caste discrimination, right? So Sarsher's character here actually represents one of the voices advocating for social change and reform in the novel. As he was poet, so definitely he will do that. Poets are basically, their thoughts are kind of rational type, rational. Okay, like Qazi Nazrul Islam, he was rational thinker. So basically, you know, uh, he was his voice, he was a person who actually represents uh, one of the voices advocating for the social change and reforming the novel, highlighting the importance and sanitation and hygiene in improving the lives of the you know marginalized communities. Basically, I want to say that yes, the incident remember right now. mm, yes, I just remember the incident. Actually, he's the person, Balnath Sharshar is the person who actually talked about the साफ सफाई के बारे में जो बोल रहा था, ठीक है। वो आप लोगों को जो मैंने बोला कि वॉज अ पोएट एंड वो डिस्कस कर रहा था, मतलब एक टॉयलेट के बारे में, वो अलग चीज है, वो अलग स्टोरी है। एक्चुअली मुझे अभी जैसे अब आप लोगों को बताते बताते होता है ना, अभी हिंदी में बता रहा हूँ तो थोड़ा सा मतलब चीजों को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है। जब मैं किसी चीज को मतलब यही लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं पढ़ा रखा है उस टाइम पे ना। तो इसीलिए मुझे अभी याद आया कि ये पर्टिकुलर जो आप लोग समझो इंसिडेंट है, एक्चुअली इकबाल नाथ सर्शर एक्चुअली द सोशल वर्कर, ही ऑलवेज इन्फ्लुएंस देम कि आप लोग साफ सफाई को लेके थोड़ा सा सजग रहो, ठीक है। इस बारे में वो बात करता है, सो ही इज द पर्सन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, आप लोग एसएलएम पढ़ोगे या फिर इस पर्टिकुलर नोवेल को पढ़ोगे तो आप लोग को और भी डिटेल में समझ में आएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ डज राजा राव डिस्क्राइब कांथापुरा इज द फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू द नोवेल? मत्स्य पुराण, स्थल पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक सो। स्कंद पुराण नहीं हो सकता, नो, स्कंद पुराण इज रॉन्ग आंसर। शिव पुराण is also wrong answer. Sthala Purana is a correct answer. Matsya Purana is not correct. Sthala Purana, because Raja Rao actually uses the term Sthala Purana. Just understand. Raja Rao actually uses the term. If you read this work, then obviously you know Sthala Purana was a term used by Raja Rao to describe Kanthapura in the foreword of his novel, because it captures the essence of village as a place with its own unique mythological and historical, if I say, significance. So Sthala Purana actually refers to a local or regional mythological or historical narrative associated with a specific uh, place or location. In the context of Kanthapura, actually, if I say, guys, Rajarao uses the term to emphasize the rich culture, rich cultural and historical significance to the of the village. The narrative of the novel is deeply rooted in the traditions, customs, and beliefs beliefs of the people of Kanthapura, making it akin again to mythological or historical uh, tale specific to that place basically. So Sthala Purana is the correct answer, and this question is very much important, guys. Just note down. Okay, so next question is we can see that which god or goddess is worshipped in Raja Rao's Kanthapura? This is very much easy question, very easy. Not Shiva, not Vishnu, not Lakshmi, Kanchamma. In the starting of the novel, Kanchamma is a goddess. Remember?
Kanchamma, Kenchamma. Kenchamma is the village goddess worshipped by the inhabitants also. Remember, inhabitants of Kanthapura, they worshipped this goddess. She is actually Kenchamma is actually revered as the protector and guardian of the village. Do you remember? The people of Kanthapura offer prayers and rituals to Kenchamma, seeking her blessings for protection, prosperity, and well-being. Right? So Kenchamma is the correct answer. So next we have the next question, that honey child, whither are you going? In which poem do you find the line? So basically, we all read a very interesting work by, I think this work by क्या नाम था, सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू का ही है ना ये, विलेज सॉन्ग सरोजिनी नायडू. कैप्टाइज लोटस ये भी आप लोगों के सिलेबस में है, ये भी पोएम्स है. इफ यू कॉल मी इज डिफरेंट, यस इफ यू कॉल मी इज डिफरेंट. So village song is the correct answer, because if you read this poetry, the poem actually by Sarojini Naidu contains the line honey child, whither are you going? The poem actually captures the essence of rural life, depicting senses from a village setting and invoking a sense of nostalgia and simplicity. So, guys, just remember what I'm saying. Just remember the line honey child, whither are you going, is a part of folk line, folk, folk like charm of the poem, where it is used to address a child or a beloved with you know endearment. And Sarojini Naidu's village song is celebrated for its you know evocative uh, portrayal of rural life, and its uses also uh, imagery and language to create, if I say, mm, vivid atmosphere. Okay, so remember, okay, village song is a correct answer. So next we have question number 14, that is which tree is mentioned in Kamala Das poem, the dance of eunuchs, or eunuchs actually eunuchs. So हम लोगों को पता है, सबको पता है, गुलमोहर. इसमें मतलब समझने वाली कोई बात ही नहीं है. गुलमोहर ट्री. Remember guys, in Kamala Das poem, the dance of the eunuchs, the Gulmohar tree is mentioned in the context of the setting of atmosphere, right? Am I right or wrong? So the mention of the Gulmohar tree adds to the vividness of the imagery and the sensory experience evoked by the poem. So yes, Gulmohar tree is correct answer. उसके ही मतलब गुलमोहर ट्री को गिर के तो सारे जो भी वहां पे यूनक्स थे वो डांस कर रहे थे ना. सो गुलमोहर ट्री, फायरी गुलमोहर ट्री, रिमेंबर. ओके, banyan tree is not correct answer. Mango is wrong. Casuarina is wrong. Casuarina tree करके अलग एक वर्क है, वो आप लोगों को पता ही है. Next question is, my private life is my own business. Who says this in Tendulkar's Silence? The court is in station. Guys, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये वर्क विजय तेंदुलकर का आप लोग जरूर पढ़ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. क्राइम एंड पनिशमेंट एक वर्क है, वो भी इंपॉर्टेंट है. जैसे ये वर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
क्राइम एंड पनिशमेंट के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, इसलिए मुझे याद है। वो भी बहुत एक अमेजिंग वर्क है। और ये जो है, ये पेपर 6 के बारे में बोल रहा हूँ, ये जो वर्क है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। क्वेश्चन इससे आ सकता है, तो आप लोग इसको पढ़ लो। सो ऑप्शंस आर मिसेस काशीकर, लीला बिनारी, रॉकरे एंड प्रोफेसर डामले। सर सिंपल, यहाँ पे आप लोग अगर इस पर्टिकुलर वर्क को पढ़े होगे, मैंने लिट चार्ट का मटेरियल भी शेयर किया था सबके साथ, शायद आप लोग पढ़े होगे अच्छे से। पिछला साल ही तो मैंने शेयर किया था पीडीएफ। तो बेसिकली लीला बिनारे जो है यहाँ पे कैरेक्टर, वो ये बोलती है कि माई प्राइवेट लाइफ इज ओन माई ओन बिजनेस। why he why she said that? Because Leela Binare is a central character who actually faces, intense security and judgment from others, especially if I say during a mock trial conducted by a group of amateur actors. Remember, guys, in courtroom, right? So this statement actually encapsulates, Leela's defiance, uh, defiance against the, uh, if I say, invasive and judgmental attitudes of society, particularly regarding her personal life and relationships. So it reflects her desire to maintain, autonomy and control over the, own affairs, despite the attempts of others to pry into her private matters. So the line actually is a product, if I say, uh, poignant moment in the play, and also it is also highlighting themes of social hypocrisy, moral judgment, and और एक है individuals struggles भी तो है, individuals struggle for agency and self determination, if I say। मैं यहाँ पे बैठे बैठे क्वेश्चन देख के ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे बस क्वेश्चन खुला हुआ है और मेरे दिमाग में बस एक्सप्लेनेशन मैं दे ही रहा हूँ अपने तरफ से। तो आप लोग क्यों नहीं, मतलब इसको सही से कर सकते हो? बताओ। इजी है यार, पढ़ लो थोड़ा सा। पढ़ने से तो सब कुछ समाधान हो ही जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लो। इसके बाद कोई पीएचडी करोगे भी या नहीं पता नहीं, कोई नेट देगा भी या नहीं पता नहीं, कोई हायर स्टडीज के बारे में सोचेगा भी या नहीं पता नहीं। तो एजुकेशनल लाइफ आपका खत्म ही है। तो उससे अच्छा ये लास्ट ईयर है, तो पढ़ लो थोड़ा सा। अभी 1-2 महीना और भी बाकी है ना एग्जाम के लिए। पार्ट 2 का एग्जाम तो मिनिमम आप सोच ही लो 2 महीना है। अभी असाइनमेंट एग्जाम भी स्टार्ट नहीं हुआ। सो आप लोग समझ लो, 2 महीना हाथ में है, अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। बस आप लोग ये सोचो कि आप लोग एमए में एडमिशन क्यों लिए थे, पीजी में एडमिशन क्यों लिए थे। क्विट मत करो। और जो सोच रहा है कि एग्जाम नहीं देंगे इस साल, कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो आप लोग गलत हो, ऐसा मत करो। एग्जाम दे दो, एग्जाम दे दो, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम दे दो, स्कोर अच्छा आएगा, एग्जाम दे दो। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें लीला बेनाडी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हार्दिक's earlier name in Mahesh Dattani's play Final Solutions? Smita, Aruna, Daksha, Bob. All we know Daksha, right? Daksha is the correct answer. Not Bobby, not Aruna, not Smita. Because in Mahesh Dattani's play Final Solutions, the character Hardika, actually Hardika I'm talking about, Hardika, okay, understand, Hardika actually undergoes a transformation over time. Earlier in the play, she is actually referred to by her previous name, Daksha, and this name change in significant as it presents a shift in identity and uh, perspective for the character. The choice to use different names for the
same character reflects the complexities of their journey and the evolution uh, evolution of their understanding of themselves and their place in society. So it also actually adds depth to the character development and thematic exploration within the play. So this is a point, guys. I'm just explaining why, because if you get this kind of question in your exam paper, internment exam, then at least कुछ तो लिखो. इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ why I'm choosing this question and why, what is the reason of choosing this answer, this option, Daksha. This is the reason behind this story, behind the story. Okay, so next question we have question number 17. The people of which country, according to Tagore, had been drugged by the British with opium. ओपियम याद है ना? ये ओपियम पेपर 5 आप लोग जब पढ़े होगे, लिरिकल बैलर बाय एस्ट्री कोलरिज, वहां पे भी तो आप लोग जाने होगे कि ये जो एस्ट्री कोलरिज है ये खुद ओपियम लेता था, ड्रग लेता था. बाकी वो बहुत मतलब गजब क्रिटिक थे. उनको जितने भी क्रिटिक का एक जो ग्रुप था उस टाइम पे, सब लोग उनको प्रेज करते थे. तो उस बारे में नहीं जाते, वो पेपर 6 का मैटर है. मैं अभी पेपर 7 के बारे में बात करता हूँ कि द पीपल ऑफ विच कंट्री अकॉर्डिंग टू टैगोर हैड बीन ड्रग्ड बाय द ब्रिटिश विथ ओपियम. सो correct answer is China. Why I'm saying this? Because in Rabindranath Tagore's critique of colonialism and imperialism, and particularly in his essay the center of India culture, he actually highlights the detrimental impact of British colonialism or various nations. So one of the key points of emphasizes in the British exploitation of China through the opium trade, guys. उस टाइम के बारे में बोल रहा हूँ ना. So during the 19th century, I'm talking about 19th century. So during the 19th century, British actually imported opium from India and sold it in large quantities in China. Despite the Chinese government's attempt to prohibit the trade due to its suffering on the Chinese population, and if I say leading to widespread addiction and social uh, degradation and economic exploitation also. So इन सब के वजह से बैन किया गया. So otherwise Tagore's actually reference to China being drugged by the British with opium unsourced at actually under sources the colonial injustice and violence, if I say uh, perpetrated by the British Empire in pursuit of economic gain. Okay, so basically, yes, not India, but China is the correct answer. Okay, so next question is, uh, uh, which dramatic structure does Tendulkar employ in his play Silence? The court is in session. आप लोग देख सकते हैं Silence, the court is in session से दो क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है. कितना इंपॉर्टेंट है ये वो. तो ये हो सकता है कि इस बार असाइनमेंट में क्वेश्चन ना दे, मगर मेन जो एग्जाम है आप लोगों का उसमें दे दे. 20 नंबर भी दे, 20 मार्क्स का भी दे सकता है और किसी और सेक्शन में भी दे सकता है. आप लोग थोड़ा सा देख लेना इस वर्क. ओके, ऑप्शन है फ्लैशबैक्स, प्ले विद इन अ प्ले, 5 act structure, absurdist structure. So the correct answer is play within a play, because guys you have to understand the play within a play is a structure. Understand? Structure. Play within a play structure is evident as the characters in the drama are themselves, participating in a mock trial. The characters who actually are members of drama troupe gather to conduct a rehearsal. रिहर्सल ही तो चल रहा था उस टाइम पे.
So I'm talking about rehearsal. Gather to conduct a rehearsal of a play titled An Ideal Omen. Title याद रखो, An Ideal Omen. However, the rehearsal takes an unexpected turn when they decide to stage a mock trial of one of their own. Miss Binari, I'm talking about, guys. Miss Binari, who is accused of uh, infanticide करके एक मतलब सजा था जिसको लेके वो अक्यूज हुई थी. इसको भी याद रखो. वो is actually, excuse me, who is accused of infanticide as the trial progress and the boundaries between reality and performance blur, and the characters and themselves, confronting conform confronting personal truths and social prejudice. So basically, आप लोग अगर इस वर्क को पढ़ो तो आप लोग समझोगे लीला बेनाडे जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर भी है. तो इसको पढ़ लेना. लीला बेनाडे को अच्छे से पढ़ लेना आप लोग. हाँ, तो ये है प्ले विद इन अ प्ले. ठीक है, प्ले विद इन अ प्ले, प्ले के अंदर प्ले. तो इट्स बेसिकली एक मतलब क्या बोले, एक स्ट्रक्चर बोल सकते हो. ठीक है, टर्म बोल सकते हो. ठीक है, प्ले विद इन अ प्ले, फ्रेज बोल सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which theme does Kamala Das poem The Dance of the Eunuchs present? Funeral pyres, wide-eyed children, sterility, crows. बोल रहा है which theme does Kamala Das poem The Dance of the Eunuchs present? yes, मतलब कुछ लोग ऐसे गलतियां करते हैं क्योंकि वहां पे फ्यूनरल मतलब हो सकता है, फ्यूनरल पायरस भी हो सकता है, वाइड आइड चिल्ड्रन भी हो सकता है. ये सब छोटे छोटे चीजें वहां पे बोला गया तो ये सब हो सकता है. मगर क्रोज के बारे में भी बोल सकते, वहां पे था, वो थीम भी एक था. मगर स्टेरिलिटी मेन एक थीम था. कमला दास का ये जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक, दे टॉक्ड शी टॉक्ड अबाउट स्टेरिलिटी थ्रू दिस पर्टिकुलर वर्क. स्टेरिलिटी मतलब जो मतलब वहां पे यूनक्स है उसके बारे में बता रहे हैं. ठीक है. The poem Dance of the Eunuchs actually deals with themes of emptiness. सॉरी ब्रेस्ट के बारे में याद है ना, सॉरी ब्रेस्ट बहुत दर्दनाक पोएम है ये. आप लोग पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा. एक बहुत अच्छा मैसेज है सोशल के लिए. एक्चुअली दिस काइंड ऑफ poem actually deals with the themes of emptiness and barrenness and sterility. ये सारे थीम को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया. And the eunuchs in the poem who actually dance with vibrant yet futile energy symbolized a lack of fertility and vitality. Even जब तक उनके पैर से खून ना निकले, वो खून निकलते हुए भी वो लोग डांस कर रहे थे. मतलब उनके अंदर कितना ज्यादा दुख है, दुख भरा हुआ है, वो तड़प है. आप लोग सोचो. The imagery of and descriptions used in the poem highlight the contrast between external uh, vivacity and the internal void, emphasizing the themes of sterility. Guys, just understand. Sterile, sterility. This is the theme. So, obviously, the theme actually, the correct answer actually here, sterility, option C. Okay. अभी नींद आ रहा है बहुत ज्यादा, इसीलिए थोड़ा सा उबासी आ रहा है. डोंट माइंड. एनीवेज, so which of the following images used frequently while portraying Rosie in R.K. Narayan's novel The Guide? Rosie याद है ना, रोजी राजू. ठीक है. कौन सा थी मतलब कौन सा इमेज एक्चुअली यहाँ पे बोला गया, जो रोजी प्रेजेंट करना चाह, मतलब यहाँ पे कौन सा जो है एक इमेज जो रोजी को प्रेजेंट कर रहा है. ठीक है.
टाइगर, लाइटनिंग, फ्लावर, स्नेक। यहाँ पे मेन जो ऑप्शन होगा वो स्नेक, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर नोवेल गाइस, Rosie is often, associated with her image to of a snake due to even वो नागिन डांस के जैसा वो, मतलब सॉरी, स्नेक डांस की तरह वो करना भी चाहती थी, guys. So basically, Rosie is often associated with the image of, क्या बोलूं, of a snake due to her dance performance as a dancer, and her dancing style is often described as if I say serpentine, or if I say snake like. Serpentine मतलब snake like भी समझ सकते हो, with fluid and sinus movements that uh, uh, captivate uh, the audience. And Rosie character here is actually depicted as enigmatic, okay, enigmatic and mysterious, much like the elusive nature of a snake. The snake of imagery also reflects Rosie's ability to mesmerize and entrap people, particularly the protagonist Raju with her charm and allure. So yes, snake is the correct answer. Option D. ठीक है, तो ये था टोटल 20 क्वेश्चंस। अभी आगे पेपर 8 भी डालने वाला हूँ, तो आप लोगों का अगर रिस्पांस अगर सही रहा, इस वीडियो को अगर मिनिमम 200 लोग भी देखते हैं, तो मैं पेपर 8 जो है उसको पोस्ट करूंगा। एटलीस्ट 10 लोग तो एटलीस्ट यार आप लोग लाइक करना इस वीडियो को, ठीक है। बहुत मेहनत से बनाता हूँ, अभी रात हो चुकी है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एग्जाम है मेरा, यूपीएससी देने वाला हूँ, ऊपर से नेट भी है, आप लोगों को पता ही है। फिर भी आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, तो मेरा जो दायित्व है, कर्तव्य है, उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। और क्लासेस वगैरह भी अभी स्टार्ट होगा आफ्टर 18th। एंड कोशिश करूंगा जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दूं, और मेरी तरफ से कोशिश रहेगा क्योंकि आफ्टर 18th मैं एकदम फ्री रहूंगा, और क्योंकि सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक में आप लोग बोल सकते हो उसको मैं पढ़ा दूंगा, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, खुश रहो सब लोग, बाय, टेक केयर।